हेलो स्टूडेंट्स, आप कैटाइंस और एनाइंस मोनोवेलेंट को लर्न कर चुके हैं। अब हम अपनी फर्स्ट वीडियो जो फार्मूला मेकिंग से रिलेटेड है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 सो इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस 8, नंबर ऑफ एनाइंस 8। टोटल फार्मूला इज 8 multiplied by 8 that is 64। 64 कैटाइंस मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट से बनेंगे। अब हम इनकी वैलेंसीज को x और y के ऊपर लिखते हैं +1 और y के लिए y -1। नेक्स्ट इसके बाद हम अपनी इन वैलेंसीज को शिफ्ट करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे y की वैलेंसी को x के सफिक्स बनाते हैं और वो 1 हमने नीचे शिफ्ट किया है। इसके बाद x की वैलेंसी को y के नीचे शिफ्ट करते हैं सफिक्स के तौर पे, वो भी हमने वहाँ लिखा है। और आपको पता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, साइंस सब्जेक्ट्स में 1 को मेंशन नहीं करते, इसी का जनरल फार्मूला x और y होगा। अब स्टूडेंट हम फार्मूला मेकिंग की तरफ जाने लगे हैं। इसकी स्टेप 1 के कैटाइंस और एनाइंस मोनोवेलेंट के लिए हमारी जो जनरल फार्मूला था हमारा वो निकल आया है x और y, और ये हमने इसी 1 को हमने मोनोवेलेंट कैटाइंस और मोनोवेलेंट एनाइंस के लिए लिखा था, जो हमने यहाँ पर x और y के साथ मेंशन किए हुए हैं। चलें अब हम चलते हैं फार्मूला मेकिंग की तरफ स्टेप 1 के। जी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोवेलेंट। हमारे पास चूँकि स्टेप 1 को हमने स्टार्ट करना है और हमारे पास मोनोवेलेंट है +1 आइन वाले और एनाइंस हैं मोनोवेलेंट, वो भी हमारे पास मौजूद हैं और इनका जनरल फार्मूला जो है वो एक्स वाई है, अभी आपने सीख लिया है। तो इसमें कैटाइन और एनाइंस को सिर्फ एक्स वाई के तौर पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं HF से। When combines with F, you will get HF hydrogen fluoride. H with Cl hydrogen chloride. This may be hydrofluoric acid, hydrochloric acid. HBr hydrobromic acid or hydrogen bromide. HI hydrogen iodide or hydroiodic acid. Now H when combines with OH, it is not written as HOH, it is written as H2O. This is water, the formula water. Now H will combine to NO3 and you will get HNO3 nitric acid. H when combines with HCO3, these two H will come to single H2 symbol and you will write as H2CO3 carbonic acid. Again when H will combine with HSO4, you will write it as H2SO4 sulfuric acid. Okay students, now come to the next line. Lithium will start combining with all these fluoride, chloride, bromide, iodide, hydroxide, nitrate, hydrogen carbonate and hydrogen sulfate or bicarbonate and bisulfate. Lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide, lithium hydroxide, lithium nitrate, lithium bicarbonate and lithium bisulfate HSO4. Next, sodium. Sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide, sodium hydroxide, sodium nitrate,
sodium hydrogen carbonate or bicarbonate, sodium hydrogen sulfate or sodium bisulfate. Now potassium fluoride, potassium chloride, potassium bromide, potassium iodide, potassium hydroxide, potassium nitrate, potassium hydrogen carbonate or bicarbonate, and potassium bisulfate or hydrogen sulfate. Okay students, proceeding the same step. For silver you will write silver fluoride, silver chloride AgCl, AgBr, silver bromide, AgI, silver iodide, AgOH, silver hydroxide, silver nitrate, AgNO3, silver AgHCO3, silver AgSO4. This is silver bicarbonate, silver bisulfate. Now cuprous, CuF, cuprous fluoride, cuprous chloride, CuCl, cuprous bromide, cuprous iodide, cuprous hydroxide, cuprous nitrate, cuprous bicarbonate, cuprous bisulfate. Okay, Ag, mercurous, mercurous fluoride, AgF, mercurous chloride, mercurous bromide, mercurous iodide, mercurous hydroxide, mercurous nitrate, mercurous bicarbonate, and mercurous bisulfate, HgHsO4. For ammonium, ammonium fluoride, NH4F, ammonium NH4 chloride Cl, ammonium NH4 Br, NH4 I, ammonium iodide, NH4OH, ammonium hydroxide. This is a well-known compound. Ammonium nitrate, NH4 NO3. You got this? Ammonium bicarbonate, HCO3, and ammonium
HSO4, हाइड्रोजन सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64 फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 2 को स्टडी करेंगे और इसी तरह से आपको फॉर्मूला मेकिंग आ जाएगी।